Hello everyone, welcome to PT Reading and Writing Filling the Blanks Real Exam Question Series. This is 34th video in this series. It means that we have already covered 33 highly repetitive and real exam questions. We have discussed also जो hacks हैं, tips and strategies to crack your RWFIBs so that we guarantee the results. If you are going to follow our strategies, then you will be able to crack your reading scores. Especially important हो गए हैं because especially now if you have to score 84 points in PTE. And first things first, now PTE is accepted for work, settlement in UK, and 90% of Canadian universities now accept PTE academic. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE. And अगर आप यही strategies follow करोगे, you can also score it, okay? Especially because now the target score है students का वो 84 plus हो गया है, 66 plus हैं. Without the reading strategies, it is difficult to achieve now, okay? Do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis, okay? PT reading integrated section timer चलता है, that is of 32 to 41 minutes. तो आपको time management खुद करनी होती है. And 5 question types are there in PT reading, and reading and writing filling the blanks and is the first question type, okay? Now this is the real PT reading scoring, where you can see reading module is of 47 or 48 marks, but उसमें से 22 तो रीडिंग के मार्क्स आपके RWFIB से आते हैं, रीडिंग में भी और राइटिंग में भी. इट मीन्स दैट इफ यू आर गेटिंग लेट्स से 4 RWFIBs, राइट, so they will be approximately, अगर हमें easy करने के लिए करना है तो right, it will be approximately of 5.5 marks each. 5.5 marks in your reading, 5.5 marks in your writing. If you remember, आपको time management reading में खुद करनी होती है, so the maximum time you can spend is 3 minutes. इससे ज़्यादा time you cannot spend. And in 3 minutes क्या आप सारे words पढ़ सकते हो? The answer is no. 3 minutes में आप सारे words पढ़ के नहीं समझ सकते most of the times. So what you have to do is you have to do the skimming, and we teach our students who take coaching from us in institute or online coaching how to do skimming. So this is today's topic, and as usual I'm going to give you 30 seconds and then we will discuss it. So okay, so you know first thing क्या हम करते हैं, we do it skimming to understand the gist कि overall central idea theme क्या है, किस बारे में बात हो रही है. Then we see the tense, कौन से tense use हो रही हैं, past tense, present tense, perfect tense, along with tone, positive tone है, negative tone है, neutral or academic tone, right? So let's skim it first. Nature is no longer an alien enigma. Okay, why I'm putting it star? Because these are new words. We have to improve our vocabulary also, and reading may vocabulary plays an important role. So I'm going to tell you their meanings also. Something immediately beautiful and exuberant offers space for us to join in. मतलब nature एक अब no longer एक enigma नहीं है, जबकि वो कुछ beautiful है और space है हमें join करने के लिए, right? Bird melodies have always been called songs for a reason. इसी कारण से bird की melodies को songs कहा गया है. As long as we something been listening, people have presumed there is a music coming out of those sizzling beaks. जब तक हमारे सुनने की क्षमता है, जब तक हम सुन रहे हैं, लोगों को लगता है कि कोई म्यूजिक आ रहा है उस बर्ड्स की बीक्स में से. अब क्या रियल एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन आता है? द आंसर इज नो. बट दिस इज लाइक पार्ट ऑफ दैट रियल एग्जाम क्वेश्चन जो हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था. सो वी फ्रेम्ड दिस सो दैट वी कैन हेल्प यू. ब्लैंक्स फॉर श्योर सेम है, राइट? इसमें कंटेंट आगे पीछे या बीच में ऐड हो सकता है, बट दीज आर द ब्लैंक्स विच वी आर गोइंग टू सॉल्व. अब इसमें 3 ऐसे वर्ड्स हैं, एनिग्मा है, राइट, एक्सूबरेंट है एंड ओपस है, जो आपको मीनिंग्स जब तक क्लियर नहीं होंगे आप
अपना रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक सही ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते हो। एनिग्मा क्या होता है, जिसको हम मिस्टीरियस कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है उसमें। सो नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू से, नेचर अब एक एलियन, एलियन पता ही है जो हमें ना पता हो, दूसरे ग्रह से हो, मिस्ट्रियस होता है। नो लॉन्गर एन एलियन एनिग्मा, अब कोई मिस्ट्री नहीं है नेचर की, ठीक है। समथिंग ब्यूटीफुल, पर वो कुछ ब्यूटीफुल है। एंड एक्सूबरेंट, एक्सूबरेंट का मतलब क्या होता है, लेविश, लग्जरी, फुल ऑफ एनर्जीज, ओके, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। ऑपस क्या होती है, कलेक्शंस, जैसे हमारा लेट्स से महाभारत है, वो एक कलेक्शन है, राइट, दोज फ्रॉम इंडिया कैन को रिलेट, ओके। इट कैन बी कॉल्ड एज अ ओपस, राइट। सो बेसिकली अ वर्क ऑफ आर्ट, बहुत बड़ा वर्क ऑफ आर्ट, और मल्टीपल कलेक्शंस को हम ओपस कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, अब आपको शायद समझ आ रहा होगा, देन इट विल बी इजी। सो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट प्लैंक विल बी। सो नेचर जो है अब एक मिस्ट्री नहीं है, ओके, कुछ ब्यूटीफुल, लेविश, सुंदर कलेक्शन है, ओके। से इट लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या यूज हो सकता है, व्हेन, वेयर, बट और अबाउट। यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक तरह से अगर आप देखो ये दोनों आपस में क्या हैं, कंट्रास्टिंग चीजें हैं, कि नेचर अब मिस्ट्री नहीं है, बट हमें पता चल गया है कि वो बहुत सुंदर कलेक्शन है, राइट, लेविश कलेक्शन है, ओके, फुल ऑफ एनर्जीज है। सो क्या हो रहा है, कंट्रास्ट हो रहा है। सो कंट्रास्ट कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय बट। So that's why our answer is going to be this, because when something immediately कोई सेंस नहीं बनाता, where immediately also कोई सेंस नहीं बनाता, और about something भी कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रास्ट कर रहे हैं। So the answer is going to be but over here, okay. Moving on to the next one, an exuberant opus, space फॉर अस टू ज्वाइन इन। अब ये मोर और लेस लाइक फ्रेजल वर्ब्स हैं, आपको इसमें prepositions की यूज होगी, राइट, एंड वी हैव टू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ prepositions here, एंड वी हैव अ कंप्लीट ग्रामर कोर्स फॉर आवर स्टूडेंट्स जहाँ पे हम prepositions को डिटेल में बताते हैं, so that you guys can understand it easily. So an exuberant opus to, for, in, with, space for us to join in. अब हमें स्पेस है, अब क्या हम टू स्पेस है, या अब आपको पता है जनरली हम स्पेस के साथ क्या यूज करते हैं, विद स्पेस फॉर अस टू जॉइन अस, इट इज अ पार्ट ऑफ preposition. If you have attended our grammar lectures, you could have easily solved it, okay? But still, we can use our process of elimination also. This is our best friend forever, that we eliminate the wrong options जब तक हमारे पास सही ऑप्शन नहीं बच जाता. To space for us to join us, कोई सेंस ही नहीं बनाता. For space, yes, तो कुछ स्टूडेंट्स फॉर चूज करते हैं इसमें, एंड एक्सूबरेंट ऑपस फॉर स्पेस, उसमें हम क्या कहना चाहते हैं, उसमें स्पेस है हमें ज्वाइन करने के लिए, राइट। सो अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो ये ऐसे ही बनता है कि किस नेचर में स्पेस है कि हम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो किसी चीज के लिए होता है, तो इसीलिए इट कैन नॉट बी फॉर ऑल्सो, और इन स्पेस भी नहीं कोई तुक बनाएगा ग्रामेटिकली। तो क्या तुक बनाता है, विद स्पेस, कि हमारे और स्पेस है उसमें हमें ज्वाइन करवाने के लिए, ओके। सो आई होप दिस आंसर वाज क्लियर टू यू। नाउ द लास्ट ब्लैंक, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आपको हमारी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीडिंग की स्ट्रैटेजीज पता है, साथ में पैरेललिज्म का कंसेप्ट पता है। व्हाट इज पैरेललिज्म, जनरली क्या होता है, एंड से पहले एंड के बाद वर्ब की सेम फॉर्म आएगी, तो जनरली सेंटेंसेस में भी पैरेललिज्म होता है। अब यहाँ पे टेंस, रिमेंबर आई टोल्ड यू कि टेंस हमें पता करना होता है कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है, तो हमें टेंस यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, ओके। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, बर्ड मेलोडीज हैव ऑलवेज बीन, हैव बीन टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। अब यहाँ पे भी देखिए बीन आ रहा है, यहाँ पे भी यस आ रहा है। तो सबसे पहली बात, वेंट बीन और वर्ब बीन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, राइट। बीन किसके साथ लगता है, हैज, हैव या हैड के साथ यूज होता है, तो हमने अपने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से वर और वेंट तो एलिमिनेट कर दिए। अब क्वेश्चन आता है, एज लॉन्ग एज वी, क्या हमने सुनना बंद कर दिया है, द आंसर इज नो, अभी भी हम सुन सकते हैं, ओके। सो आवर आंसर टू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज हैव,
बट अगर आप पैरेललिज्म देखिए, मैंने पहले ही हिंट दे दिया था, हैव बीन यहाँ यूज हो रहा है, तो यहाँ कौन सा यूज होगा, हैव बीन ही यूज होगा। ओके, तो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि कैसे हम ग्रामर के रूल से इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने रीडिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। Let's see if all the answers are correct. Yes, all the answers are correct. So what is our reading and writing filling the blank strategy? Our reading and writing filling the blank strategy is based on context, lexical resource and grammar. Context में skimming, you had seen the importance. Today we saw the forward or the backward reading, क्योंकि parallelism का आइडिया हमें backward reading से आया कि पहले वाला सेंटेंस कौन सा टेंस यूज कर रहा था, have been यूज कर रहा था, तो ये वाला सेंटेंस भी have been ही यूज करेगा। Tone is also important a lot of times. Lexical resource में collocations, we have a detailed list for our students. Along with that, phrasal verbs and vocab, we have seen now 3 new words. One is your magnum, which means luxuriously or full of energies. Okay, opus means एक बहुत बड़ी collection artist की, जैसे महाभारत हो गया, या फिर you can say full of collections. Okay, and then exuberant. Okay, exuberant means luxuriously, right? And then we had seen another word which was enigma. Enigma का meaning क्या था? Enigma का meaning था mystery. Okay, so I hope you will remember these words. And grammar, we have a complete grammar course free of cost for our students, where we teach parts of speech, subject verb agreement, prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, British English rules and sentences. And this is a complete course, बहुत important है, especially if your target is 66 or 84 plus now, because grammar knowledge is very important for your reading, for your writing and listening. Okay, and remember, you have just 3 minutes to attempt your reading filling the blanks. In first 30 to 60 seconds, you are going to skim the content, and in the next 90 to 120 seconds, you can use process of elimination to come to the answers. अगर आपको answers नहीं find out हो रहे, we had seen the usage of process of elimination in today's video also. All the strategies which we teach are validated and proven strategies. What is the proof? The scorecards of the students in the ticker below, as well as these latest stories where students have been scoring 90, 86, 89 points. This is our WhatsApp number 8699121121. So in case you want to attend our online lectures or offline lectures, you can contact us on this number. And do not forget to subscribe to our channel, because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.